Orchids, the international school renowned for its excellence in education, is thrilled to unveil its latest initiative, Astro Fair Go Cosmo, an extraordinary 3-day event set to captivate space enthusiasts of all ages. Scheduled to take place at Orchid's Tathavde campus in Pune from May 24th to May 26th. This impressive experience promises a thrilling journey into the realms of astronomy, cosmology, and physics. Following the success of Go Cosmo events in Bangalore, Mumbai, the school chain kicked off its Pune edition on Friday. The Astro Fair Go Cosmo is designed to ignite a fever for space exploration, science, and technology among students and adults alike. With a lineup of engaging activities such as alien encounter, planetary ponder, gravitational gym, comet crafting, cosmic collider, virtual voyager, stellar spectacle, star seeker, and spinning spaceship workshop, participants will delve into the mysteries of the cosmos while enhancing critical thinking and problem-solving skills. This is a wonderful opportunity for our parents and students. It's India's first Astro Fair. As sir already said that we have organized in different cities and ours is the third city. We are finished with Bangalore and Mumbai and Pune being the third place. So we take this opportunity as a great event inviting our students who are already, हमारे बच्चे एस्ट्रोनॉमी लैब है हमारे स्कूल में, बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, नए नए चीज़ सीखने को मिलती है उनको देख के हमें लगा है कि क्यों हम नॉन ऑर्किडियंस को भी ये एक्सपोजर दें। इसके वजह से ही इतना दूर से हमारे केबल की टीम, हमारे बीपी सर रोबोटिक्स का, हमारे मैम विद्या कैट्स सुमित्रा मैम, उन्होंने डिसाइड किया है कि क्यों हम नॉन ऑर्किडियंस को भी ये इंट्रोड्यूस करें। बच्चे एक्सपोजर जैसे जितना हमें नए नए चीज़ सीखने को मिलती है वो बच्चे अच्छे सीखते हैं, इसके लिए ये एस्ट्रो फेयर पुणे में लेके आए हैं। This fair is going to be for next 3 days and we have invited students from all age groups, mostly from 5 years and above. We have a lot of events which caters to different age groups and different age group students are going to enjoy and participate as per their age category. Here for the Go Cosmo event and I'm like quite surprised by how everything over here is set up. Everything here is like amazing and the things that are available over here, I don't think it's possible to get it like somewhere so close to me without traveling very far, because the space shows they have and then the activities that they have planned, they're like remarkable, and that's something for me to learn from them, because these activities will not only help me for like future and all, but you know, it sparks an interest in me that yeah, I can do something like this right now. If I learn something about this, maybe it can help me in the future, and you know, it's just something quite interesting, because astronomy is a vast area of study, and like learning from here is just amazing. I'm gonna have like a lot of fun over here. The activities planned are great and just yeah, it's a wonderful event. So hope all of you enjoy. हमारी स्कूल ऐसी है जो इतने सारे इवेंट्स अभी कर रही है, जैसे गो कॉस्मो, ये हमें इतना कुछ सिखा रही है। हमारा स्कूल जो है ये एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट हमें जगा रहा है। जैसे हमने कितने सारी चीज़ें भी की है, हमारे लिए एक कैंप भी बनाया था, जैसे खोपली में स्पेस कैंप, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे गए थे, उन्हें कितना कुछ पता चला प्लैनेट्स के बारे में। फिर हमारे लिए प्लैनेटेरियम्स भी किए थे, जहाँ पे हमें यूनिवर्स के बारे में कितना कुछ बताया गया था। करू शकतो की काय गोष्टी कोणत्या कोणत्या प्लॅनेट्सवर असतात। आता आम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी आहे जिचं नाव आहे थॉर सॅमर, तर त्याच्याने आम्ही लर्न करू शकतो की कोणत्या कोणत्या प्लॅनेटवर कोणते किती किती वेटवरती असणार। आणि आमच्याकडे वेइंग मशीन पण आहे की ती ॲक्टिव्हिटी खूप फ्री आहे सर्वांसाठी, तर तुम्ही त्याच्यावरती स्वतःचं वेट, आता तुम्ही धरतीवर आहात, पृथ्वीवर आहात, तर पृथ्वीवर तुमचं जेवढं वेट आहे ते दुसऱ्या ग्रहांवर नसणार, जसं शनी शुक्र त्या ग्रहांवर नसणार, तर त्या